मामला हमारा गैस पाइपलाइन का था। आपने अमरीकी सफारतकारों की जो बात है वो सुनी है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का मुआहदा है बहुत अरसे से चल रहा है। 7.6 बिलियन डॉलर्स का ये मुआहदा है और हमें गैस की ज़रूरत भी है। इसके ऊपर रिचर्ड हॉलब्रुक ने पाकिस्तान के अंदर आके कहा था कि हम आपको वार्न करते हैं कि जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियां लगेंगी उसकी वजह से ये शायद आप बेल जो है मंडे ना चढ़ा पाएं, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना कर पाएं, तो जरा देखभाल के चलिएगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया, उन्होंने ये कहा कि हम बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को बैनुल-अक़वामी कवानीन के तनाज़ुर में देखेंगे। इससे पहले शायद एक बयान उनसे मंसूब हुआ था कि हम अमरीकी कवानीन के तहत इस मुआहदे को देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान को उसकी तरमीम की या उसकी तस्हीह की और ये कहा कि बैनुल-अक़वामी जब पाबंदियां लगेंगी तब हम देखते रहेंगे। बरतानिया के उसके ऊपर रवैया क्या है? अगर माजी का हवाला देखा जाए तो बरतानिया वही कहता जो अमरीका ने कहना शुरू कर दिया है, यानी पाकिस्तान को वार्निंग देता। क्या ये मौजूदा हुकूमत इस किस्म की वार्निंग दे रही है या नहीं? जब हमने गैस पाइपलाइन के हवाले से सवाल किए जिसमें ईरान का और भी जिक्र था जिसकी जोग्राफियाई अहमियत हमारे लिए ज्यादा है, तो हमें कुछ ये जवाब मिले। Let's move to the more mainstream areas, as it were. We read with great interest your comments about the Iran-Pakistan gas pipeline. The previous government, the one that you replaced, had a different take on that, slightly different take on that. Is this a policy review that has taken place that you're saying that is between Pakistan and Iran? Or is this just a goodwill gesture that you have articulated here in Pakistan? It's not a policy review. Of course, much of what I've been saying is about goodwill, because I think there is an enormous amount of goodwill which we need to build on now between the UK and Pakistan. What I've said on that is also just a recognition of the facts. Pakistan is a sovereign country. It will make its own decision about this, but in the light, of course, of UN Security Council resolutions. And I make no secret of the fact the European Union will be taking action among the additional sanctions that the EU is likely to put together on Iran, will be a prohibition of technical assistance to investment in oil and gas development in Iran. And that's specified in what the European Council has agreed. So clearly other countries, including the UK, will be taking action on that. Pakistan must then decide its own position in the light of that. But it's not part of my beliefs that you go and lecture another country on what to do. We work together, we explain our position, they decide their position. That is how diplomacy should work. But Iran is going to continue to be a problem as far as the bilateral equation between UK and Pakistan is concerned. UK is concerned about Iranian nuclear power plants, isn't it? I wouldn't say this was a problem bilaterally. It is a global problem, a global issue. Remember that the resolution, the UN Security Council resolution on Iran, has been passed with the support of China and Russia and African countries. And so this is the world saying to Iran, you cannot go on in this way. So I wouldn't single it out as a bilateral issue between the United Kingdom and Pakistan. All countries in the world have to decide on their attitude to this. We will always explain our position very clearly. You'll swing on the side of the international consensus, but if Pakistan were to persist with this, then obviously it would become a problem between the two countries. But of course there's a global context to it. Let's talk about what's wrong with Iran pursuing a nuclear program. Well, the main thing that is wrong with Iran pursuing a nuclear program that they cannot show is for peaceful purposes is the threat of a nuclear arms race in the Middle East, which I think it's easy for everyone to see is a very, very dangerous thing. For world affairs, it's a very dangerous thing for people living in the Middle East. We fear that other countries will then seek nuclear weapons if Iran acquires nuclear weapons capability. And Iran is also in breach of its obligations under the Non-Proliferation Treaty, which it has signed, which require it to cooperate with the International Atomic Energy Agency in an open way, something it has not done. So that is why Iran's position is worrying to the rest of the world, and why we say we will have these sanctions, but we are at all times open to negotiate about the nuclear program. That door has always been open to negotiate with Iran, and it remains open now. We hear other countries say that other options are also on the table, such as a preemptive strike on Iran's nuclear installations. Would your government support something like that aggressive an action? We're not calling for that. We're not advocating that. We, in common with other governments, have never said we would always be
opposed to that, but I've often made clear before I came into government that while Iran acquiring nuclear weapons would be a calamity for the reasons I've described, military action against Iran might also be a calamity. And that is why we have to try to resolve this by peaceful, legitimate means. And the sanctions imposed by the UN Security Council are peaceful, legitimate pressure on Iran to negotiate properly and openly about its nuclear program. यकीनन अपनी जो जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं बेट्स को हेज कर रहे हैं, यानी वो क्या करना चाहते हैं इसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर हमें एतमाद में नहीं ले रहे या मालूमात नहीं दे रहे। होना ऐसा ही था। आप किसी फॉरेन सेक्रेटरी से ये तवक्को नहीं करते कि वो दिल खोल कर और ज्यादा अल्फाज में अपनी पॉलिसी को बयान कर दे, लेकिन आपने फर्क जरूर महसूस किया होगा कि वो कह रहे हैं कि हम किसी मुल्क को लेक्चर नहीं देना चाहते। अगर यहाँ पर पुरानी हुकूमत होती तो शायद यकीनन एक आध लेक्चर इस इंटरव्यू के जरिए हमें सुन लेना पड़ता। बहरहाल जब बैनुल अक़वामी पाबंदियां लगेंगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी और उसका असर इस गैस पाइपलाइन पर पड़ेगा तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज यकीनन होगा, क्योंकि हम बाहमी मुआहदे पर कमिटेड हैं और हमारा अपना ये ख्याल है कि ईरान के ऊपर पाबंदियां जो हैं वो नाजायज़ हैं और यकतरफा हैं। अगर पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ कायम रहा और बैनुल अक़वामी तौर पर बरतानिया ने वही पोजीशन ली जिसका फॉरेन सेक्रेटरी जिक्र कर रहे थे, तो पाकिस्तान के लिए चैलेंज यकीनन होगा। लेट्स गेट इनटू अ ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर एनर्जी के मुआहदे के ऊपर भी जो बातचीत हुई उसका खुलासा भी आपके सामने रखेंगे और अपना तज्जिया भी देंगे। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, हम आपको इंटरव्यू सुनवा रहे हैं जो आज सुबह हमने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से इस्लामाबाद के अंदर किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक मुआहदे की बात हो रही है जिसके तहत चीन एक पुरअमन न्यूक्लियर तवानाई के 2 रिएक्टर पाकिस्तान को फराहम करेगा और दुनिया भर के अंदर शोर मचा हुआ। अमरीकी इसके ऊपर बड़े नाला है, बावजूद इसके कि अमरीका ने तमाम तर ग्लोबल अपोजिशन के बावजूद हिंदुस्तान को ना सिर्फ इस किस्म की डील फराहम की बल्कि उसके ऊपर मुसर है कि ये दुनिया में अमन फैलाने में बड़ी करामत डील ये साबित होगी। पाकिस्तान अब चीन के साथ उसी किस्म की डील करना चाहता है और कर चुका है, और चीन ये जब रिएक्टर फराहम करेगा तो हमें यकीन है वाशिंगटन के अंदर एक गलगला बुलंद होगा और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। बरतानिया इस वक्त क्या पोजीशन इख्तियार करेगा? बरतानिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसकी अप्रूवल चाहिए होती है इस किस्म की डील करने के लिए उसमें मौजूद था और बरतानिया ने उस ग्रुप मेंबर की हैसियत से हिंदुस्तान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील को अप्रूव किया। इसके अलावा G8 का भी बरतानिया मेंबर है और G8 ने भी हिंदुस्तान और अमेरिका की डील को सपोर्ट किया। क्या बरतानिया अगर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस किस्म की डील सामने आती है ये डील सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? असूलन तो उनको करना चाहिए, अब कोई बात बनती नहीं है। अगर हिंदुस्तान और अमेरिका की डील काबिल कबूल है तो पाकिस्तान और चीन की डील के अंदर क्या कबाहत हो सकती है? जब हमने ये सवाल पूछा तो कुछ उन्होंने हमें ये जवाब दिए। Let's flip to Pakistan and China, 2 nuclear power plants. The deal is in the pipeline. What's your government take on that? Well, we would have to see more about the details of that. I've heard about that, and it's very important that any such deal lives up to the rules of the nuclear suppliers group. There are clear international rules about that. But I would like to see more details of what is proposed before responding in more detail. If it is just as the deal was between India and the US, will that be acceptable to your government? Well, again, let's see the details of that. Clearly, that is it's perfectly fair for people to point out that. Because your government supported, I mean, the UK supported, not your government, UK supported that. And Yes. I believe your government continues to pursue that policy. We would continue to support that. So yes, that's an entirely fair point for people to make. But remember that we have to see the details of in each country of any such deal. There are good reasons why the world is worried about the spread of nuclear material and nuclear know-how. Of course, there are very good reasons for us to be concerned about that. But I'm not going to take a definite 100% position on this without knowing all the details of what is proposed. And during your talks here in Pakistan, did this issue come up? More details being sought by your government from Pakistan? We haven't discussed that in detail. I think it is
is a thing to return to. We have discussed in broader terms the energy needs of Pakistan, which clearly are considerable. That is one of the problems for this country. There is no doubt about that. There are major issues over energy, over water, which the international community must respect, needs of Pakistan. And we have to work together on sorting those things out. न जाने मजीद मालूमात वो क्या मांग रहे हैं और ये क्यों नहीं कह रहे कि अगर उसी किस्म की डील हुई जिस तरह की हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान हुई थी तो बरतानिया उसको अप्रूव करेगा। नाज़रीन, ये वो दोहरे स्टैंडर्ड हैं जिसके ऊपर हमें आवाज़ बुलंद किए रखनी चाहिए।